Hello everyone, welcome to 99 Notes. Now we are starting with our first series of ethics. We will be dealing with all the aspects and covering the syllabus thoroughly in this particular series. And I'm hopeful that you will be liking and really benefiting out of this ethics series. The speciality of this ethics series is that it is going to be focused on the mains examination, strictly on the syllabus and on the basis of the latest pattern of the examination. तो आपको इस ethics series में शुरू से लेके अंत तक ज़रूर बने रहना है and do let us know your feedback, what more you want from us to be covered and we will love to cover it just for you. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्शंस एंड एक्ट ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमन एक्शंस, ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एथिक्स डील्स ओनली विद ह्यूमन एक्शंस एंड नॉट एक्ट ऑफ ह्यूमन. सो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट लेक्चर. व्हाट इज ह्यूमन एक्शन, व्हाट इज एक्ट ऑफ ह्यूमन. नाउ व्हाट इज ह्यूमन एक्शन? Human actions are defined as those actions that are performed deliberately and consciously by humans using their intellect and will. यानी कि वो actions जो human beings अपनी knowledge से, अपनी बुद्धि को लगाकर, अपनी knowledge से और willfully यानी voluntarily करे, उसको कहा जाता है human actions. It is that action that proceed from the deliberate will and the knowledge. यहाँ सारा खेल है deliberation का, will का, voluntariness का and knowledge का. अगर कोई भी पर्सन deliberation के साथ कोई काम करता है तो उसको human act कहेंगे. अब उसका एक एग्जाम्पल है, आप रोड पे चल रहे हैं और आपको लगता है कि वहाँ आपको एक भिखारी मिलता है, आपको लगता है कि ये भूखा है तो आपको उसको खाना देना चाहिए. सो वट एवर यू आर ईटिंग, यू शेयर्ड योर फूड विद द बेगर. दिस एक्ट ऑफ शेयरिंग फूड विद द बेगर, दिस विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन एक्ट. वाई? बिकॉज यू हैव द नॉलेज दैट द बेगर इज हंग्री. Secondly, you have the will to share your food with this beggar. So it is a voluntary action and that is why this particular action will be called as human action. Now let us come on to the next part, that is act of human. So all voluntary actions are dealt as human actions. But what about those actions that are involuntary in nature? Will that be covered in human actions? No. That will be covered in acts of human. Acts of human are involuntary and are performed without intervention of intellect and free will. Acts of human वो actions होते हैं जहाँ पर human being की उस action perform करते समय खुद से कोई voluntariness, कोई will नहीं होती है. They are largely involuntary. They are either done by coercion through a person. हो सकता है किसी को ज़बरदस्ती कुछ काम करवाया जा रहा हो, उसकी वहाँ पर will ही नहीं है, voluntariness नहीं है, उस केस में इसको कहा जाएगा act of human. एग्जाम्पल के तौर पे circulation of blood, heartbeat. Have you ever thought this, that your blood keeps on circulating in the body? Your heart keeps on beating. Do you order your heart to beat? Do you order your blood to circulate? This is an involuntary action that is being performed in your body. You are not responsible for this particular act. Why? Because it is involuntary. Take another example. आप सड़क पे चल रहे हैं और अचानक से कोई आपके हाथ से खाना छीनकर भाग गया. Now, this action of giving food to a person who has snatched food from your hand, will this be categorized as act of human or human act? This will be categorized as act of human. क्योंकि जब आपसे किसी ने खाना छीन के कोई भागा है तो उस समय आपकी will नहीं थी, जो आपकी कंसेंट नहीं थी.
It was an involuntary act performed. So this particular action will be termed as act of human and not human action. Now, what you need to understand is when we talk about ethics, ethics only deal with the morality of human action and not the morality of acts of human, because a human being is not morally responsible for acts of human. कोई भी involuntary action होता है तो उसके लिए human morally responsible नहीं है. So we judge the ethicality, morality of an action only of that action which is human action, performed with knowledge as well as performed with the free will. This is a very important fact because ethics is the logical justification of human action. Ethics logical justification है human action का, act of human का नहीं. Now let us move on to elements of human action. The first element of human action is the intellectual element, that is knowledge. The human act is voluntary when its different elements and its implications are sufficiently known by the agent or the doer prior to the operation of the will. जब तक जो doer है, जो agent है, who is performing the action, जब तक वो एजेंट को सफिशिएंटली ये नहीं पता होगा कि उसके एक्शन के क्या इम्प्लीकेशंस हैं और उस नॉलेज के बिना अगर उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्शन, एज दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड नॉट ह्यूमन एक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे देयर मस्ट बी एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द एस्पायर्ड ऑब्जेक्ट, राइट. Now understand that example है इसमें. For example, there is a person who wants to kill a lady. Person A wants to kill a lady and he shot her right on her head and the lady is killed. But the person was not knowing that the lady is pregnant. Now the question arises, will this particular person who murdered the lady will be responsible for the murder of the lady as well as the murder of the fetus, or he will be responsible for the murder of the lady only? Now here comes the ethical aspect. अगर इस particular person को ये पता था, यानी knowledge में था कि जिस लेडी को वो मारने जा रहा है वो प्रेग्नेंट है, अगर वो नॉलेज में था तो उस केस में वो लेडी प्लस जो फ्यूटस है उसके दोनों के मर्डर के लिए लायबल होगा. लेकिन अगर ये पर्टिकुलर पर्सन को नहीं पता था दैट द लेडी ही इज गोइंग टू किल इज प्रेग्नेंट, इफ दिस वाज नॉट द प्रेगनेंसी ऑफ द लेडी वाज नॉट इन द नॉलेज of this particular person, then in that case the person will be liable only for the murder of the lady and not the fetus. क्योंकि knowledge होना ज़रूरी है. Ethics कहता है कि आपके पास human action तभी होगा जब उस action के लिए आपके पास knowledge होगी कि आपके इस action का ये result हो सकता है, implications ये हो सकते हैं. So it will be dealt कि if the person has sufficient knowledge of the action that has to be performed, only then it will be called as human action. Next important element of human action is free will. Volitive element, free will. If a human person for some reason is not free to choose what she would like according to her insight and will, but has to act against one's will, that means the action is not free. Consequently, such an act cannot be designed as a human act. यानी कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करिए जहां पर कोई ह्यूमन बीइंग ही वॉज नॉट फ्री टू चूज व्हाट एक्शंस ही कैन परफॉर्म. क्या क्या एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं उसके लिए वो फ्री नहीं था चूज करने के लिए, उसकी विल नहीं थी, ये एक्शन इनवॉलंटरी था. उस केस में
इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ह्यूमन एक्शन, फ्री विल नहीं होगी। एग्जाम्पल, अ मेंटली डिस्टर्ब पर्सन। एक जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन एक इंसेन पर्सन यानी कि एक पागल व्यक्ति है, उस पागल व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसको कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, एंड ही इज नॉट डूइंग दैट अंडर फ्री विल. He is performing, an insane person is performing acts with psychic compulsion and not free will. एक इंसेन पर्सन अगर साइकिक कंपल्शन यानी कि अपनी पागलपंती के कारण कुछ एक्टिविटी कर रहा है और कि उस दौरान ही वो उसने किसी को हार्म कर दिया, तो वो पर्टिकुलर एक्शन ह्यूमन एक्शन नहीं कहलाया जाएगा. क्यों? क्योंकि उसकी विल उसमें नहीं थी, यानी कि उसकी कंसेंट नहीं थी. जो भी इंसेन पर्सन एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो फ्री विल में नहीं हो रही थी. इट वॉज अंडर साइकिक कंपल्शन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दीज एग्जाम्पल्स द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन. फॉर अ ह्यूमन एक्शन देयर आर टू एलिमेंट्स, वन knowledge and second is free will. If any of these two elements are not present, then it will not be called as human action but act of human. So you need to understand this boundary between human action and act of human. अब हम डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. एक कैश, आप फॉर एग्जाम्पल यू आर अ कैशियर इन अ शोरूम और आप कैश काउंटर पे बैठते हैं. सडनली कुछ चोर आए और उन्होंने आपको गन पॉइंट पे रखा और आपसे कहा कि जितना कैश है काउंटर पे वो आप उनको दे दें. एंड अंडर दिस कोअर्जन यू प्रोवाइडेड ऑल कैश टू दी thieves. Will this action of yours or providing cash to the thieves will be called as human action? No. This will not be called as human action. Why? Because it is involuntary in nature. Coercion यानी by use of force, आपसे किसी ने जबरदस्ती कैश मांगा तो उस केस में आपकी फ्री विल नहीं थी. फ्री विल ना होने के कारण इसको एक्ट ऑफ ह्यूमन कहा जाएगा, ना कि ह्यूमन एक्शन. और क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट ह्यूमन एक्शन नहीं है, hence you will not be morally responsible for giving cash to thieves when you are under compulsion, under force, right? अब इसी केस में एक अलग थोड़ा सा देखते हैं. आप अपने दोस्त के पास गए और उनको बताया कि आप जनरली एक शोरूम में काम करते हो, कैशियर हो और कैश स्टॉल पे आप मोस्टली इस समय काउंटर पे इस समय बैठते हो, और आपने अपने दोस्त को ये बोला कि आप चोरी करने के लिए आना, मेरे ऊपर गन पॉइंट रखना एंड देन आई विल गिव यू कैश और हम उसमें 50-50 कर लेंगे, वट एवर यू विल बी गेटिंग. नाउ द सेम सर्कमस्टांसेस, thieves came, you are the cashier of this showroom, they put you on the gun point, ask cash from you, all cash that is available on the counter, and you provided the cash under these circumstances. Now the situation is changed. अब situation change हो चुकी है. क्यों? क्योंकि आपने deliberately information leak करी and you facilitated this robbery. And under these circumstances, you have free will. That means it is a voluntary act. ये एक voluntary act है और आपने जानबूझ के पूरा फैसिलिटेशन करवाया. सो दिस विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन एक्शन एंड यू विल बी मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन. अब इसी केस में थोड़ा एक ट्विस्ट कर देते हैं. यू वेंट टू अ फ्रेंड, शेयर दिस इंफॉर्मेशन वेरी कैजुअली विदाउट एनी मेलिफाइड इंटेंशन दैट यू आर वर्किंग इन अ शोरूम, you are a cashier and you are generally very busy during so and so time because you are busy in the cash counter. Your friend leaked this information to a thief. आपके फ्रेंड ने गलत भावना के साथ यही इंफॉर्मेशन किसी और को भेज दी. And that person came as a thief, put you on the gunpoint again,
and ask all the cash in the counter. Now this act of providing cash to the thief, will that be called as act of human or human act? This will be called as act of human and not human act, because in this particular case also you do not have free will. आपकी free will नहीं है. This act is not voluntary. Under coercion you are asked money. So this is the whole concept of human action and act of human. Two important points that you need to remember here: human action are those actions that are voluntary in nature, plus the doer of the action must have sufficient knowledge of the implications of the action. Secondary, if the action is involuntary, it is actually act of human. And human being is morally responsible only for human actions and not act of human. Now, what are the three factors that determine the morality of human acts? There are three factors, that is object of the act, circumstances surrounding the act, and or intention that the one performing the act has in mind. So when you determine the morality of human acts, these are the three important points that you must have in your mind. So this is all from us today. Acts of human and human action. I'm sure that you must be liking this particular video and you must have learnt about this concept. Please keep watching us, sharing this video, and provide us your valuable feedback, and do let us know how did you like this video. Is that of useful to you? Thank you very much.